Greetings students, I am Nagesh Kumar, Assistant Professor of English, presently posted at Government College, Kosli. Dear students, today we will discuss about sonnet and its types. So dear students, a sonnet is a poem that is made up of 14 lines and it has an intricate rhyme scheme, and the sonnet it was developed in Italy in 14th century. The famous Italian poet Petrarch is considered to be the originator of sonnet form. The term sonetto it is derived from the Italian the term sonnet is derived from the Italian word sonetto, which means a little sound. So sonnets can be of two kinds. First one is the Italian or Petrarchan sonnet. Italian sonnet is also named as Petrarchan sonnet because it was originated by 14th century poet Petrarch. So this Italian sonnet it is divided into two parts. First part is known as octave, which is made up of 8 lines, and the second part is made up of 6 lines, that is called sestet. So the first part, which is known as octave, it consists of 8 lines. तो पहला जो पार्ट है सोनेट का इसको ऑक्टेव कहते हैं और इसकी 8 लाइंस होती हैं. तो ऑक्टेव की क्या खास बात होती है? ऑक्टेव की खास बात यह है इसकी राइम स्कीम. और दूसरी चीज़ है कि इन ऑक्टेव द सब्जेक्ट मैटर is introduced and it takes the form of an argument. So there will be introduction of the subject matter, and after that it will be discussed and it will take the form of an argument, and it has the rhyme scheme of ABBA ABBA. So we can say that the octave is having the rhyme scheme of ABBA ABBA. Means first line will rhyme with the fourth line, fifth line and eighth line, and in the same way second line will rhyme with third line and sixth and seventh lines. So that will be the rhyme scheme of octave, and the second part of the Petrarchan sonnet is called sestet. It has 6 lines and it has the rhyme scheme of CDE CDE or CD CD CD. तो जो सेकंड पार्ट है सोनेट का, सेकंड पार्ट को हम सेस्टेट कहते हैं. और सेकंड पार्ट की क्या खास बात होती है कि इसके अंदर जो राइम स्कीम है वो या तो आपको मिलेगी CDE CDE और CD CD CD. CDE मीन्स फर्स्ट लाइन विल राइम विद द फोर्थ लाइन, सेम वे सेकंड विद द फिफ्थ एंड थर्ड with the sixth line. And another rhyme scheme that can be contained by sestet is alternating rhyming lines. So we are talking about Petrarchan sonnet. So Petrarchan sonnet having 2 stanzas, octave and sestet. In the octave you will find that the argument that is introduced, the topic is introduced and it will take the form of an argument, and in the second part, that is sestet, final conclusion will be drawn, and the argument which was introduced in the first part, that will be further discussed. It may be criticized or the topic may be appreciated, and the final conclusion will be drawn. तो पहले पार्ट में तो टॉपिक का इंट्रोडक्शन होगा, इंट्रोडक्शन के बाद में इट विल टेक द फॉर्म ऑफ एन आर्ग्यूमेंट. सेकंड पार्ट में उसके ऊपर क्रिटिसिज्म होगा या उसके बारे में जो फर्दर कुछ कमेंट्स किए जाएंगे और उसका कंक्लूजन कर दिया जाएगा. ये 2 तरीके की सोनेट्स हैं. ज़्यादातर जो इन दी Petrarchan सोनेट यू विल फाइंड दैट दीज वर जनरली रिटन ऑन द थीम ऑफ courtly love and beauty, and there are certain other English poets, those have written personal and subjective poems also written following the Petrarchan model. For example, John Milton's famous sonnet on his blindness, it is completely personal and subjective poems where the poet laments his own blindness, and in the final section the poet affirms his complete faith in God. And there are so many poems, those are written on the theme of courtly love and beauty, and most famous English poets are Sir Philip Sidney
Edmund Spenser, William Shakespeare, William Wordsworth, William Wordsworth, and certain other poets in the age of Elizabeth. So sonnet became highly popular. So let us talk about the second types of sonnet, that is English or Shakespearean sonnet. So friends, before discussing about English or Shakespearean model, we will go back to the history of English literature. So in the 16th century, English King Henry VIII, he commissioned his two courtiers, Sir Henry Howard, who is popularly known as Earl of Surrey, and Sir Thomas Wyatt, to study Italian poetry and to make necessary amendments into it so that it can suit the British audience or British readers. So सर थॉमस व्याट और अर्ल ऑफ सरे को हेनरी VIII जो इंग्लैंड का किंग था इन 16th सेंचुरी, उसने कमीशन किया था कि यू हैव टू स्टडी इटालियन पोइट्री, बिकॉज एट दैट टाइम इटली वाज कंसिडर्ड टू बी द सेंटर ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड आर्ट. तो लिटरेचर का, आर्ट का, कल्चर का सेंटर उस टाइम में इटली को माना जाता था. तो इन दोनों कोर्टियर्स को वहाँ भेजा गया और उन्होंने स्टडी की थी इटालियन पोइट्री की. तो सर थॉमस व्याट introduced blank verse into English poetry, and this blank verse, which is a meter, it became the most popular meter of English poetry, and most of the English poetry that is written in the form of blank verse. तो ब्लैंक वर्स जो है वो इंग्लिश पोइट्री का एक पॉपुलर मीटर बना और इट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय अर्ल ऑफ सरे और सर हेनरी होवार्ड. And the second one, Sir Thomas Wyatt, he studied Petrarchan sonnet and he introduced the sonnet form into English poetry. And this sonnet form, it was popularized by William Shakespeare. He has written totally 154 sonnets during Elizabethan age, and out of those 154 sonnets, 126 were addressed to a friend named Mr. W.H. and till date the identity of Mr. W.H. has remained a mystery. No one can say decisively about the identity of that person, and the 26 poems, 26 sonnets, they were addressed to a dark lady who deceived poet in her love, whereas Mr. W.H. he remained true and faithful to the poet. And the two sonnets, they can be kept in either category. So it was popularized by William Shakespeare, and William Shakespeare has made certain amendments to the structure of Petrarchan sonnet. So Petrarchan sonnet, that was made up of 2 stanzas. William Shakespeare actually divided it into 4 stanzas, and the first 3 stanzas were made up of 4 lines each, and they are known as quatrains, and the last stanza is made up of 2 lines, which is popularly known as couplet or volta. So विलियम शेक्सपियर के अंदर आप देखोगे कि जो सोनेट फॉर्म के अंदर उसने 3 तो क्वार्ट्रेंस के अंदर में डिवाइड कर दिया था उसको, 3 क्वार्ट्रेंस का मतलब ये है कि 4 लाइंस के जो स्टेंजा हैं, और एक उसने कपलेट में डिवाइड कर दिया. कपलेट को ही वोल्टा के नाम से भी जाना जाता है. तो क्वार्ट्रेंस के अंदर उसकी जो राइम स्कीम है, उसकी राइम स्कीम में थोड़े से अल्ट्रेशंस किए गए थे विलियम शेक्सपियर के द्वारा. जो फर्स्ट स्टेंजा जो है, दैट हैज़ द राइम स्कीम ऑफ AB मीन्स फर्स्ट लाइन राइम्स विद द थर्ड लाइन एंड सेकंड विद द फोर्थ लाइन, एंड सेकंड स्टेंजा हैविंग द राइम स्कीम ऑफ CD. सेम वे, सेम पैटर्न. थर्ड स्टेंजा EF and the final couplet that has the rhyme scheme of GG, means alternating rhyming lines. So in the first 3 stanzas the topic is introduced, it is further discussed, it takes the form of an argument, and all the characteristics, all the phases of that topic are discussed in the couplets. And in the final stanza, that is a couplet,
the final conclusion of the sonnet is drawn, and the couplet is also known as volta, because sometimes the arguments take different form or spin off event, means it takes sharp turn. So in the couplet the conclusion may be in sharp contrast to the argument proposed in the first 3 stanzas. तो जो फर्स्ट 3 स्टेंजाज हैं जिसके अंदर हमने आपको बताया है कि आर्ग्यूमेंट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, उसके बारे में उसके जो जितने भी पॉइंट्स हैं, जितनी भी उसकी करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनको डिस्कस किया जाएगा, उसको एक्सप्लेन किया जाएगा, एलाबरेट किया जाएगा, और जो फाइनल कपलेट है उसमें उसका कंक्लूजन ड्रॉ किया जाएगा. और कई बार ऐसा पाया गया है कि जो कंक्लूजन है वो इसके आर्ग्यूमेंट से बिल्कुल ही शार्प कंट्रास्ट भी मिल सकता है, इसीलिए इसको वोल्टा भी कहा जाता है, बिकॉज द आर्ग्यूमेंट में टेक स्पिन ऑफ में टेक स्पिन और टर्न. सो दिस इज द मॉडल विच वाज प्रोपोज्ड बाय विलियम Shakespeare, and it is also known as English sonnet. There is third form also which is known as Spenserian sonnet. तो third form which is known as Spenserian sonnet की खास बात है कि इसके अंदर और शेक्सपियरियन सोनेट के अंदर कोई ज़्यादा फंडामेंटल डिफरेंस नहीं है. ये सोनेट फॉर्म भी 3 जो क्वार्ट्रेन और एक कपलेट में ही डिवाइडेड रहती है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है इसमें इसकी जो राइम स्कीम का. वो डिफरेंस क्या है, इसका जो फर्स्ट स्टेंजा है सेम विलियम शेक्सपियर और स्पेंसर के फर्स्ट स्टेंजा की राइम स्कीम ए बी सेम मिलेगी. स्पेंसर ने क्या स्टार्ट किया था, जो फर्स्ट स्टेंजा की जो लास्ट लाइन थी उसका जो सेकंड जो क्वार्ट्रेन है उसकी फर्स्ट लाइन उसी राइम के साथ रखी थी. तो सेकंड स्टेंजा इसकी लास्ट जो है राइम है बी सी. सेम वे में थर्ड सी डी एंड ई कपलेट स्टैंडिंग अलोन. ये राइम स्कीम मिलेगी स्पेंसरियन जो है वो सोनेट में. 16th सेंचुरी जो एडमंड स्पेंसर है, ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ दिस फॉर्म एंड दिस इज नेम्ड आफ्टर हिम, एंड ही हैज ऑल्सो रिटन अराउंड 100 sonnets in this form. So friends, as I have discussed with you, sonnet has remained a popular form to the present day and has been adapted to a number of experiments to present a large variety of themes and emotions. तो सोनेट फॉर्म जो एक पॉपुलर पोइटिक फॉर्म रही है, और इसके अंदर विद द प्रोग्रेस जो चीज़ पॉपुलर है उसके अंदर आप देखोगे कि उसमें काफ़ी सारे एक्सपेरिमेंटेशंस होते हैं, और उसकी जो अलग अलग वैरायटी के थीम और इमोशंस जो हैं उसका एक्सप्रेशन होता है. और ये जो आपके BA सेकेंड ईयर के जो सिलेबस के अंदर जो सोनेट है, सेल आई कंपेयर दी टू ए समर्स डे, विच इज़ ऑल्सो टाइटल्ड एज सोनेट 18 बाय विलियम शेक्सपियर. दिस इज द फेमस एग्जाम्पल ऑफ इंग्लिश और शेक्सपियरियन सोनेट. So in this sonnet the poet has compared his friend's beauty to a beautiful summer day, and in the first stanza the poet has made the comparison, and in the first stanza of that sonnet the poet has found that his friend is even more beautiful and lovelier than the summer's day, because summer day has certain flaws or faults, whereas his friend's beauty is flawless. So in the second stanza the poet finds that sometimes the poet has found fault with the summer day, like sometimes summer sun may become extremely hot and sometimes it is hidden behind the clouds, whereas his friend's beauty will remain constant. It will not diminish with the passage of time, whereas summer season passes away very soon. And in the third stanza poet has compared his friend's beauty to the everlastingness, and the poet says that he has immortalized his friend's beauty by writing this sonnet. And in the final couplet the poet makes a famous declaration that if someone can prove him wrong, then he would cease to be a poet. And the poet further acknowledges that as long as there will be existence of human beings upon this earth, till that time human beings will keep on reading about his friend's beauty, and they will remember him and they will never forget about it. At last we can say that he was quite confident of his sonnet that it will become
popular and the coming generations will keep on reading it. Thank you very much.